Good evening, everyone. Today we are going to discuss about cash-rich business. It is not a business platform. In spite of that, I am talking about the cash-rich business because even you are not doing the business, even you are doing your job or anything. In spite of that, you have to understand what is the cash-rich, because cash-rich is a one concept. Cash-rich is a one term that is the most important for your life, in my life. If I am doing business, I am doing profession, then it is the most important thing. Even I am doing job, because we have heard lots of the person, they are getting the salary on 31st or 1st, but they don't have the money in account at after 10, 12, 15. So this is that we have to understand ki even he is not doing business, in spite of that he is facing some cash crunch. So what is the reason behind it? So today we are going to discuss about the cashless system of the business, not a job person. Because for the job person, we will take the another session ki what is the situation and how it can be converted into cashless job. But now today we are going to discuss about the cashless business. So if you have any question related to that, you can just unmute yourself at the moment and you can ask. If you are not able to understand my thought process, you are not able to understand my concept, you are not able to understand my PPT anywhere, or you want to ask anything, you have the any doubt, so you can just you have to unmute and you have to ask. Reason is that this is the one of the most important thing. So my motive is that ki whatever you have the doubt, I have to clear. So before starting this thing, okay, today I'm going to discover some pillars. What is the pillars of the business where you have to establish that pillar, and once it is the established, so your business will be the cash rich or yeah. So before starting, I have there is a two word, surplus cash and profitable cash. So anyone can, like Premji, Savanaji, Geetaji, and Minuji, anyone who is the online. So can you confirm me ki what is uh, this terminology, what it is saying? What is the cash surplus or what is the profitable cash? So anyone can say anything if you have any idea. Just you have to unmute and whatever you have the thought process, whatever you want to say, it can be wrong, it can be right, but I need some word from your side. Yeah, which is beyond what we have invested. Okay. So, actually, Minu ma'am, I got your point, but there is the two word. One is the surplus cash and another is the profitable cash. Uh-huh. That I want to know. Surplus cash means okay, suppose that I'm put at my hand in my pocket and it is coming 100, 500, 10,000 rupees, then it is, you can say it is the surplus cash. But my question is, what is the profitable cash? Any other person, any thought? Profit in cash form, maybe. No, no, definitely. You are now you are on track, Samanaji. You are on track. A profitable cash means the profit in cash. And suppose that, just I am giving the one example to you. Suppose that in the whole year, my total turnover was 1 CR. My total turnover was the 1 CR. Okay. And my total costing, including purchase cost, overhead, rent, salary, conveyance, telephone expense, that's around 98 lakh rupees. So what is my profit? That is only 2 lakh rupees. My profit is only 2 lakh rupees. Okay. Now, I have applied to bank and bank has given 10 lakh rupees. So definitely 10 lakh rupees surplus in my bank. So that you can say it is the surplus, but it is not exactly surplus. Reason is that you have to repay your bank. Surplus in your bank account, okay, you have the 10 lakh rupees, but it is not real surplus. So what is your profitable cash? It is the only 2 lakh rupees. Reason, your turnover was 1 CR and your whole expenditure, including rent, purchase cost, labor costs, professional charge, website expenditure, everything that is around 98 lakh rupees.
and 1 CR minus 98, it's become only 2. The profitable cash is only 2 lakh rupees. Even in your bank, it is the 2 plus 10. So you can say, I have the surplus of the 12 lakh. 12 lakh rupees, but it is no. Reason is that 10 lakh rupees that bank has given as a loan, that is your liability. So that we have to understand, okay, whatever the money in my bank, whether it is the surplus or whether it is the profitable, there is the one concept. And another thing I will discuss in the later slide. Suppose that uh, your total margin is around 2%. As I have explained to you, 1 CR is the turnover and 98 lakh rupees your whole expenditure. So net, what is your net margin? Only 2%. Okay. You have given some goods on 31st March. In your balance sheet 31st March, it is some data like you have to recover from some person, and that is around 5 lakhs, 6 lakhs. Let's assume, I assume it is the data 10 lakh rupees. कि आपको market से you have to recover 10 lakh rupees. It is the swing. 1 crore रुपया में से 10 lakh रुपया you have to collect from market. It's okay. After 1 month, if your debtors is saying कि Manish, I'm not able to, let's assume कि 10 lakh rupees has to give from the one party, and this party is saying कि Manish, I'm not able to make the whole money. Can we settle in the 7 lakh rupees? Because I am the bankrupt and I am going to close my account. If you will not accept 7 lakh rupees, even I will not pay anything. You can go to file suit or whatever you want to do. You can send the legal notice. You can go court anywhere. But I have only 7 lakh rupees. If it is agree by you, you can collect. Otherwise, whatever you want to do, because I have lost, my business is closed and I am insolvent. What you will do? भैया जो मिल रहा है दे दे. What मतलब my I have to recover 10 lakh rupees, but I am able to get only 7 lakh rupees. दे दो. What will happen? 10 lakh में से 7 lakh you are getting. It means कि 3 lakh rupees gone. आपके टोटल प्रॉफिट कितनी थी? 2 लाख. और 2 लाख में से 3 लाख आपका लॉस हो गया. देन यू आर सेइंग कि बैलेंस शीट विल शो कि 2 लाख का प्रॉफिट है, बट नेक्स्ट ईयर वो अपने आप 3 में से दो दो प्रॉफिट था, 3 विल बी एक्सपेंडिचर एट द बैड डेट, तो एक का लॉस हो गया. तो दैट आई वांट टू मेक डिफरेंस बिटवीन कि व्हाट इज द कैश सरप्लस, व्हाट इज द प्रॉफिटेबल cash. So I hope कि now you got my point. If not, so at the end of the session, let me try to give the another example, or when I will go through the whole slide. So I am 100% sure you will get my point कि what I want to convey you. Now, if you are doing business, then you have to understand कि whether you have the surplus cash in business or not. You have to understand ki what is your gross margin, what is your net margin. I will explain to you. Just I am giving to you ki if you are doing business, it can be a professional, it can be retail business, it can be a manufacturing business, it can be a service business, any kind of business. But you have to understand, suppose that you are trading, you are manufacturer, then you have to again understand, do you have the control on stock? What I want to say, control on the stock. You have seen medicine shop, you have seen general store shop. So when we visited any medical shop, when we visited any general store shop, what we are seeing, there is some product like perfume, there is some other product, they have given the 50% discount, 40% discount. It means that product is not selling. That's why they want to give the 30, 40, 60% discount कि कुछ भी हो निकल जाए. Or even we have seen in the every shop we are saying there is some stock like 1%, 2%, 5% that is in the corner side, and you can say it is the damaged good. They have to remove, but they don't want to remove. Okay, so whether are you controlling your stock or not? Because वो stock 1% हो या 2%, so that you are not able to sell on the right price. When you are not selling on the right price, then it will reduce your profitability. So that I want to say. If you are doing the business or profession, anything, so whether it is working on MIS or not, MIS, that is the monthly information system. And in last question for you, whether you are running your business or business is run to you. Like आप घर पर बैठे हुए हो, देर इज द वन पर्सन इन योर ऑफिस, दे आर कॉलिंग सर, एक डेटर्स आ गया है, जीएसटी का छापा पड़ गया है, या फिर सर आग, दुकान में आग लग रही है, मतलब एनीथिंग, या देर इज द सम कस्टमर हैज कम, सर आप आ जाओ. तो यू आर रनिंग बिजनेस, हाउ बिजनेस इज रनिंग टू यू, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. Like
I am giving here as a class to you, so it means कि business is running to me. I am not running business. If I have given the my recorded class, then I can say कि I am running business. Now business is running to me. Reason कि it is the live. और जब तक मैं नहीं आऊंगा, live will not work. So here business is running Manish. But if it is the you can say the recorded, तो what will happen? मैं रात में, सुबह में, कभी भी किसी भी टाइम I can make the recorded this session and I will send to Mevin or Savana ji or his her team, and they can just start it. Then I can say कि I am running business, but now business is running me. So that we have to identify कि हमारे बिना बिजनेस चल रहा है या बस हमारे से ही बिजनेस चल रहा है. That we have to understand. इस स्लाइड पर हम ज्यादा जाएंगे नहीं. जस्ट यू वांट टू जस्ट टेक कि whether do you have the credit policy, whether do you have the department, whether do you have the MIS or each and everything. Okay, तो इस पर हम ज्यादा डिटेल पर अभी जाएंगे नहीं. There are lots of the business issues, like every businessman is facing the cash crunch scenario. When he or she has to pay GST or TDS on time, like GST, she or he has to pay on 20th next month, but they are getting the lots of the confusion. अरे यार, I have to pay the GST 1 lakh rupees, but in my account only 80,000 rupees, only 90,000 rupees, or only 50,000 rupees. Then they are calling the debtors कि sir, मैंने आपको जस्ट आई हैव द डिलीवर गुड्स, आई हैव सोल्ड गुड्स 1 month बैक एंड सर देयर इज द सम मनी इशू, कैन यू गिव मी द एटलीस्ट 50,000 रुपीज सो आई कैन मेक द माई statutory compliance related to GST. Okay, so that kind of the problem we are always every businessman is facing. Sometimes what happen कि we also take the goods on credit. So credit is calling कि Manish, I have given the goods for the 45 days. Now it is the 50 days. When you will make payment? And we are just delay. कि सर मैंने जिसको माल भेजा था उसने भी पैसे नहीं दिए, तो हाउ आई कैन पे टू यू. तो इस तरीके से इशू चलते रहता है. ओके, तो व्हाट विल हैपन कि व्हेन यू आर नॉट पेइंग द क्रेडिटर्स ऑन टाइम, व्हेन यू आर नॉट पेइंग क्रेडिटर्स ऑन टाइम, तो व्हाट विल हैपन, your credential, your credibility will not build up, and might be possible in the future your creditors will not provide good credit to you, and he will also create some misconception about your credit worthiness इन मार्केट की. भाई साहब मनीष को दो तो वो 45 दिन की जगह पर 50 दिन 200 दिन के बाद पैसा देता. भाई इसको उधारी मत देना. ओके, that collection. When we have given the goods on the credit, हमने बेचा क्रेडिट पर, but whenever I am calling, I am asking my money. I am asking my money. I am not getting कि भाई सब्सिडी दे दो, मेरे को लोन दे दो. I am asking my money. In spite of that, I am not getting point. I am not getting my collection. So, and you, as I have the discussed, 1 CR में 98 lakh rupees, it is the profitability only 2%. Then it is the biggest problem. Oh, we have the extra overhead cost. Sales, we are getting the low. Okay. There is some other question like manpower कि बंदा आता है, they have the learn and भाग जाता है. And my client is saying कि मनीष जी आपके दुकान पर तो आपके शॉप में आपके कंसल्टेंसी में तो कोई बंदा 6 महीने से ज्यादा टिकता नहीं है. Whenever I am coming your office, तो I am seeing the all time तो new faces. तो what will happen कि आपका कस्टमर पर उतना अच्छा क्रेडेंशियल नहीं जाता है, बिकॉज दे आर थिंक कि जो बंदा अपने स्टाफ को नहीं संभाल सकता है वो मेरे बिजनेस को क्या संभालेगा. Compliance problem in the today scenario where there are lots of the compliance in the BJP government, Modi government, like TDS, ESI or MCA. There are various kind of the compliance issues. Okay, loan trap. Once we have taken the loan, always we are filing so भैया loan मिल जाए. Once I will take the loan, I will pay off the another one loan. Once I will have the another loan, तो मतलब it will be the cycle of loan. In the whole day, as being the owner, you are just working on the fire fighting कि आज ये काम कर लिया, कैश कलेक्शन कर लिया, डेटर्स को टरका दिया, गवर्नमेंट को पैसा नहीं दिया, कोई रिजाइन दिया तो उसको हम बोले भाई साहब बेटा रुक जा, मैं तेरा 5,000 बढ़ा देता हूँ, 2,000 बढ़ा देता हूँ. तो वी आर जस्ट वर्किंग ऑन द फायर फाइटिंग. ओके, बट वी डोंट हैव द मैनेजमेंट विजन कि हाउ आई हैव टू वर्क, मीन हाउ आई विल ग्रो, हाउ आई कैन वर्क इन द फ्यूचर. तो ऑनर इज द हेड ऑफ द ऑल डिपार्टमेंट की अगर किसी डिपार्टमेंट पे एनीथिंग हैज टू वर्क, तो विदाउट परमिशन ऑफ ऑनर कोई डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहा है. तो अगेन
when you are head of the whole department, all departments, what will happen? You will not have the time for the future vision. इसके अलावा now it is the blank page for you कि if you have the any other kind of the facing the problem in your business apart from that, then you can put out. But more or less I have the mentioned lots of the various problem. In spite of that you can have, so you can just put down your business issue. Now issue is that information is the one thing and implementation is the one thing. Now I'm going to discuss about the some important thing today, and you have not implemented. What will happen? You have information, but you have not implemented. You might be possible you have information, you have part in implemented, and there is a something जो हमें पता ही नहीं होता है कि what I have to do. So that is the biggest mistake, or this is the biggest problem for anyone. We are not aware what I have to do. Like I have explained to you in the 1 CR turnover, your expenditure is only 98 lakh rupees. Then if you have not find out, you have not compare, you have not understand what is your gross profit, what is your net profit, then it is the biggest problem. You will think, अरे यार 1 CR तो आ गया, बैंक से भी 10 लाख आ गया, I have the various lot of the cash. In spite of that, at the end आप फिनिश हो जाओगे, बिकॉज आपको जो जानना था वेयर यू हैव टू टेक डिसीजन, आपने वो समझा ही नहीं. तो इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट यू हैव टू इम्प्लीमेंट इफ यू वांट टू सक्सेस, यू वांट टू डू समथिंग गुड इन योर लाइफ. So today we are going to lot of the thing, but first thing I will say some four pillar of the business and how you have to run the business smoothly. Now, whatever I have told to you, if you are saying ki, sir, it is the impossible thing. So just I want to give the one example कि in one day cricket, if we have never thought कि एक बंदा, एक बैट्समैन can make 200 run in the one inning, but 2010 में सचिन तेंदुलकर has scored. 2010 में पहली बार 200 रन बनाया. उसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड कि आफ्टर दैट 11 और बंदे ने बना दिया. 2000 वनडे चल रहा है 1971 से, तो 71 से अप्रॉक्स 30 ईयर्स उधर और 10 ईयर्स 40 ईयर्स में एक बंदा ने 200 नहीं बनाया था, लेकिन इधर 15 सालों में 11 और बंदे ने 200 एक इनिंग में बना दिया. इट मीन्स नथिंग इज इम्पॉसिबल. We must have the willpower, or once we have the willpower, we can do each and anything. Now, when you have started business, a startup or anything, so your first motive should be or must be profit. I have to earn profit. I have to earn profit. Otherwise, there is no sense of the business. Second, wealth. Once I have the profit, so I will make some saving. I will invest. I will create some wealth. And in last, I will go for the IPO. If I'm the such kind of the scenario, so I can go for the IPO. So that this is my thinking of the business motive for everyone. Now, I am saying, suppose that in any business there is a profit vary from the 2% to 20%. Let's assume anyone has the profit of the 10%. So 1 CR ka turnover, I have taken the example, and profit is the 10%. They earn 10 lakh rupees is the profit. But your debtors is around 25%, like 25 lakhs, 30 lakh rupees. And on an average, you will find out any business. So what you will find out कितना टर्नओवर होता है उसका 20 से 25% डेटर्स हर बिजनेस में होता है. If it is not, if anybody is saying कि my debtors is only 5%, 2%, 0, then that is the ultimate business. But if you have the debtors 25%, 30%, then it is the biggest problem. And this is the possibility is happening in various cases. Then what is the possibility and how you will do? The first thing, you have to make the some credit policy. That I'm talking about the credit policy. Credit policy is that suppose that you have 10 old customer and you new customer is coming, then you have to make 10 customer ko you have given on the credit your goods, your services. But now when any new customer is coming, so you can make a condition. Bhai sahab, I will make goods,
services to you, but I need 100% in advance. Otherwise, I will not do the business. If new customer is the needed, then definitely he will give the 50% advance, 100% advance, any amount at least दे. So what will happen? Suppose that there is the order of the 5 lakh rupees. उसने 2 लाख दे दिया, तो now you have the only risk of the 3 lakh rupees. दो तो recover हो गया ना कम से कम. Suppose that he has given 4 lakh rupees. तो 1 ही लाख का रिस्क है ना, 4 लाख तो रिकवर हो गया. तो that you have to find out. क्योंकि ओल्ड कस्टमर को सपोज दैट यू आर गिविंग द क्रेडिट ऑफ 50 days ऑफ ओल्ड कस्टमर, और नाउ यू आर सेइंग कि सर मैं आज से ना क्रेडिट बंद कर रहा हूं. तो यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट कि जो बंदा आपके साथ बिजनेस 1 साल 2 साल 5 साल से कर रहा है, और यू आर गिविंग द क्रेडिट ऑफ 50 days, एंड एक सडनली यू आर stopping your credit, what will happen? It will never work. So I am saying कि when you have the old customer as well as the new customer, तो you have to find out कि किसके साथ मैं कैसे काम करूं. और definitely you can make the some policy with the new customer. It is not possible for the old customer, but the new customer you can always make the such kind of the situation. Then सेल प्राइस वेरिएबल रखना है या फिक्स रखना है. तो व्हेन योर सेल प्राइस ऑफ द एनी सर्विस और एनी गुड्स इट इज द फिक्स, देन इट विल बी द इजी. सपोज दैट I am chartered accountant, I am filing return. Suppose that in my office everybody is aware कि ITR 1 salary return is filing with the rate of the 10,000 rupees. Just I am giving the one example. What will happen if I am not in office and any client will come? They will come through mail, WhatsApp, Facebook, or anywhere. Okay. So even I will be not in office, so my staff will say, sir, we will do your work, but our fee is the 10,000 rupees. If I have said, bhai, any client will come, so first you have to call me. I will decide time. I will decide price. So what will happen in that scenario? In that scenario, what will happen? You will lose your time. So you have to think sale price should be variable, sale price will be fixed. Like in general store, suppose that we are going to buy a pen. तो अगर ऑनर आता तभी ये पेन 10 रुपीज में देता है, देर इज द सर्वेंट तभी वो 10 रुपया में ही देता है. ऑनर रहने से 950 में नहीं देता, बिकॉज दे हैव द स्टैंडर्ड राइट्स कि भैया मुझे एमआरपी पर ही बेचना है. आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी डिस्काउंट. तो ये चीज आपको स्टैंडर्डाइज करना है कि हर कस्टमर के लिए वी हैव टू फिक्स द प्राइस फॉर द डिफरेंट और इट विल बी द फिक्स फॉर द एवरी कस्टमर. लाइक आई हैव टू गिव द क्लासेस, आई हैव टू टेक द ट्रेनिंग, देन आई हैव द स्टैंडर्डाइज कि if I have to go for the 3 hours, then my charge will be 20,000 rupees. I have to go the for whole day, then I will charge 50,000 rupees. If I am thinking, अरे यार ये तो बहुत अच्छा क्लाइंट है, why not I charge the 1 लाख रुपीज. अरे यार बेकार क्लाइंट है, लेकिन चलो यार मैं टाइम फ्री है, चल मैं 5,000 में भी कर लेता हूँ. व्हाट विल हैपन? इट विल इम्पैक्ट योर वर्क और इट विल इम्पैक्ट टू थिंक कि भाई मैं फ्री हूं तो चलो 5 में भी कर लेता हूँ. तो व्हाट विल हैपन? जो कस्टमर ने सस्ते में लिया वो इफ ही विल रेफर टू अदर, तो क्या बोलेगा? अरे मनीष जी तो 2 घंटा आए थे, 5,000 रुपया लेते हैं, काम हो जाता है. तो इट विल लूज योर क्रेडिट. ठीक है. Then you have to create automate recovery system. Suppose that I have given the goods on the credit, then मैंने दिया 50 days का क्रेडिट पर, तो आई हैव टू मेक द ऑटोमेट. व्हाट आई हैव टू डू कि बिफोर 5 days, 50 days से पहले 5 दिन कितना होता है? 45 days. मैं 45 days पर मेरे तरफ से एक मेल चला जाए, एक एसएमएस चला जाए. आफ्टर 2 days देर इज सम कॉल. आफ्टर 3-4 days मेरा एक सेल्स वाला चला जाए. तो जब 3-4-5 बार वो जाता है ना किसी के पास, देन यार आई हैव टू मेक द पेमेंट. सपोज दैट इन मोबाइल व्हाट वी आर सेइंग, इफ इट इज द प्रीपेड, तो जब 28 days या जब भी ये प्रीपेड खत्म होने को होता है इस मोबाइल का रिचार्ज, व्हाट विल हैपन? 2 दिन 3 दिन पहले से मैसेज आना शुरू होता है कि योर पैक इज गोइंग टू एक्सपायर, योर पैक इज गोइंग टू एक्सपायर. तो देन आपका दिमाग, अरे यार अगर मैंने नहीं किया, व्हाट विल हैपन? माय सर्विस विल बी लूज, माय नंबर विल बी ब्लॉक. ओके. तो आप फटाफट क्या करते हो? चल भाई रिचार्ज कर लेते हैं, 2 दिन पहले ही रिचार्ज कर लेते हैं कि ताकि मेरा फोन डिस्कनेक्ट ना हो, ओटीपी आना बंद ना हो जाए. तो यू हैव टू आल्सो क्रिएट ऑटोमेट रिकवरी. जैसे सपोज दैट इवन इफ यू डोंट हैव द बिजनेस, यू आर इनटू जॉब or you're a housewife, you are the retired person, and you have given the 1 lakh rupees your friend, your relative as a loan, and he told कि भाई साहब 6 महीने में दे दूंगा. What do you have to do?
जब 5 महीना कंप्लीट हो जाए एक मैसेज डाल देना है कि सर भाई साहब 5 महीना हो चुका है तो प्लीज अगले महीने पैसे दे देना। फिर 10 दिन के बाद एक मैसेज कर दो। तो अगले 6 महीने तक में अगर आपने ये किया, मतलब 5वां से छठा महीना में 30 दिन में 5 बार आपने मैसेज डाल दिया, तो झक मार के कुछ ना कुछ तो पैसा आपको देना शुरू कर ही देगा। या अगर उसका इंटेंशन नहीं है तो विद इन द 6 मंथ यू विल गेट हिज इंटेंशन कि उसको देना है या नहीं देना है। तो दैट आई एम सेइंग द you have to create automate recovery system, otherwise you will get the lots of the problem. Again, you have to make the credit limit, like मुझे इसको कितना उधार देना है कितना उधार नहीं देना है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सपोज दैट मेरा एक फ्रेंड आता है, ही इज सेइंग कि यार माय वाइफ इन द हॉस्पिटल एंड आई नीड 10 लाख रुपीज, बट आई हैव क्रिएटेड माय सेटअप माय माइंड कि भैया मैं उधार ज्यादा से ज्यादा किसी को 20,000 दूंगा, चाहे वो मरे या जिए मैं नहीं जानता। मैं मेरा जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है, आई कैन लूज बाय 20,000 मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चाहे कुछ भी हो जाए। तो व्हाट आई डिड, आई हैव क्रिएटेड माय क्रेडिट लिमिट कि मैं 20,000 से ज्यादा लोन नहीं दूंगा। व्हेन आई एम डूइंग बिजनेस देन आई हैव टू क्रिएट कि मिस्टर एक्स को मैं 1 लाख तक का माल फ्री में दे सकता हूँ 10 दिन 20 दिन क्रेडिट पर, लेकिन 1 लाख से ज्यादा हो जाए, लाइक एक बार उसने 50,000 का माल खरीदा, ओके जी, फिर मैंने उसके लिए लिमिट किया हुआ 1 लाख, फिर उसने 40,000 का माल खरीदा, तब भी मेरा 1 लाख लिमिट पर मैंने नहीं कुछ बोला। अगेन वो आता है भाई साहब 25,000 का फिर से माल दे दो, देन आई एम सेइंग हिज लिमिट इज 1 लाख बट ही ऑलमोस्ट 50 प्लस 40 90 lakhs पर 90,000 पर आ चुका है। व्हेन आई विल सेल द अनदर बिल, तो ये एक से क्रॉस हो जाएगा, देन आई कैन से कि भाई साहब योर हमने आई हैव द क्रिएटेड वन लिमिट फॉर यू दैट वाज द 1 लाख रुपीज एंड ऑलरेडी आपने 90,000 रुपीज का उधार लिया हुआ है। नाउ आई विल नॉट सेल टू यू, हाँ आप 90 पूरा पे कर दो, मैं आपको 25 का दे देता हूँ, ओके। या फिर इफ इट इज द फ्रेश माल फ्रेश सेल, आप ये 25 दे दो ताकि आपका लिमिट वही 1 लाख के बीच में रहे। तो व्हाट विल हैपन, योर रिस्क विल बी रिड्यूस, तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो आई हैव द वन रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि if you think that this is the good session for you, so this coming Saturday I am taking physical session at IIT, opposite IIT. So if you are interested or anyone is interested, I will share the detail to Savana ji or Geeta ji, so see both of girls or person will share in the all group. And if you think this is the good session, that is the online, or you think in your family, in your contact, there is a one person who has such kind of the business issues, business problem, so they can come and they can get the lots of the benefit, because just I am showing the just you can say the 5 to 10% of the whole thing, and that training will be around 2 hours 30 minutes ka, and it will be the very good session. Now तो व्हाट इज द सोल्यूशन, आई हैव टोल्ड यू कि इतना सारा चीज करना है, तो देन व्हाट इज द सोल्यूशन, सोल्यूशन इज दैट जस्ट स्कूल, स्कूल में एडवांस पेमेंट चलता है। व्हेन यू आर गोइंग द हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में इफ मतलब डॉक्टर हैज टू डू ऑपरेशन, तो वो क्या कहता है भाई साहब पहले 1 लाख रुपया रख दो तब डॉक्टर साहब ऑपरेशन करेंगे। इफ यू आर नॉट डिपोजिट 1 लाख रुपीज 2 लाख रुपीज 5 लाख रुपीज, दे आर नॉट डूइंग सर्जरी, दे आर नॉट गिविंग एनी ट्रीटमेंट टू यू। तो अगर होटल व्हेन वी आज के डेट में सपोज दैट इट इज द हल्दीराम, इट इज द बीकानेर, इट इज द पिज्जा हट, इट इज द मैकडी, पहले हम पे कर देते हैं, सपोज दैट आई हैव पेड और अभी हम नॉट टेकन फूड बिकॉज देयर इज सम इमरजेंसी कॉल इन आवर होम, तो हम वहां से चला आते हैं, लेकिन वो होटल वाला कहता भैया पैसा दे दिया खाना लेने, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिफंड टू यू। तो जब रेंट हम एडवांस देते हैं, तो व्हेन दिस देयर इज सम रूल, हॉस्पिटल होटल प्रॉपर्टी स्कूल, तो हमारा बिजनेस क्यों नहीं हो सकता है इसी मॉडल पर कि भैया मैं भी एडवांस लूं। बिकॉज हमने माइंडसेट बना रखा कि भाई दुनिया उधार पर चलता, मैं भी उधार पर चलता, तो हॉस्पिटल क्यों नहीं उधार पर चलता, व्हाई नॉट स्कूल इज गोइंग ऑन द क्रेडिट, व्हाई नॉट होटल इज गोइंग ऑन द क्रेडिट, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। यू कैन मेक दैट कि भाई 100% एडवांस पर काम करूंगा या 50% एडवांस पर काम करूंगा, या सीओडी दे दो, वंस यू रिसीव माई गुड्स देन यू हैव टू पे, या यू कैन रिड्यूस सम क्रेडिट पीरियड। वो कैसे करना है दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू। देयर इज द वन एग्जांपल कि 1% दे आर प्रोवाइडिंग द गुड्स टू द 10,000 30,000 40,000 धीरे धीरे करके उसका 3 लाख का सिनेरियो हो चुका है। नाउ ही सेइंग कि मनीष जी मैं तो बर्बाद हो गया 3 लाख, तो
प्रॉब्लम इज विथ यू, रीजन यू हैव नॉट क्रेडिटेड क्रेडिट पॉलिसी कि आपको 3 लाख तक पहुंचने का क्या जरूरत है। जब 40-50 हजार आया था उसी टाइम आप बिल्डिंग बंद कर देता है, आपका 85 फंसाना आज के डेट पर इट इज द स्टक विद द 3 लाख रुपीज। तो दैट यू हैव टू क्रिएट एवरीथिंग इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल एज द बिजनेस लाइफ। सॉल्यूशन कि आप अपने आप को इतना मार्केटिंग करो, यू हैव टू डू सच काइंड ऑफ द मार्केटिंग कि आपके पास ऑर्डर लाइन में लग जाए। लाइक यू हैव क्रिएटेड कि मैं आई एम वेरी गुड कंसल्टेंट, आई एम वेरी गुड डॉक्टर, व्हाट विल हैपन, आपके पास क्लाइंट या कस्टमर पेशेंट लाइन में लगे रहेंगे। वंस यू हैव द लॉट्स ऑफ द ऑर्डर इन पाइपलाइन, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एक एक उधार नहीं देगा, दूसरा देगा, दूसरा नहीं देगा, तीसरा देगा, चौथा देगा, पांचवा देगा, कोई तो देगा। यू हैव टू प्रोवाइड द बेस्ट प्रोडक्ट एंड अगेन सेल्फ आफ्टर सर्विस भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो I have lots of the other thing in aspect, but I want to close. And if you have any question, you can ask. If you have any feedback, please give me. And you are interested to join my physical seminar on the Saturday, 10:30. I will share detail to Savana ji and Geeta ji, everyone. So thank you, everyone. So if you have any question, any doubt, you can ask, you can give feedback if you have any, please. Good session, Manish ji. Thank you. Yeah, and there is the one question they have asked the active income and the passive income. So in my physical class, because right now it is not so much time because that is the session of the 2 hours, 2 hours and 30 minutes. Now it is the only 30 minutes, so I am not able to cover each and everything. So active income and passive income, that is the most important thing, and we have to make the balance. So active income source can be one or two that I have to discuss in 1 and 2 class when I have taken the session related to finance, related to investment. And passive income, we can have the various source like 2, 3, 4, 5, 10. So any kind of the we can have the passive income, and जितना ज्यादा पैसिव इनकम का सोर्स आपके पास होगा, यू विल बी द वेल्दी सो मच। थैंक यू सो मच मनीष जी, अब थोड़ी क्लैरिटी आ गई है what you were asking in the beginning. Thank you. Yeah. So just I'm giving the one more example for the passive income. Suppose that you have one house, आपने इसको रेंट पर लगा दिया. Some money has been given invested in mutual fund, equity, FD. So what will happen कि in suppose that you are not able, your business is not good, or you have given the resignation from your job. What will happen कि आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसा आपके हाथ में आते रहेगा. So it is my advice to you कि एज मच एज यू कैन क्रिएट पैसिव इनकम सोर्स आप जरूर करें। इफ यू वांट टू नो कि आर्ट ऑफ द अर्निंग ऑफ द पैसिव इनकम, you can discuss with me, and it will depend person to person. Like anyone have the interest in the hobby like painting, dancing competition, so again it is the it can be the passive income. Someone can have the some kind of the different change, someone has a very good wealth or good money in their family. So everyone has the own scenario, and that will depend on hobbies, your lifestyle, your wealth. Yeah, Manish ji, and like this topic, cash rich business, I think everybody nowadays wants one active income and passive income. So Definitely, definitely, everybody Manish. wants this, and I think this session has clarified for everyone that how they can create this. So just 1 second, I am sharing here only for 1 second. I'm sharing the my this one, and I will share in the group also with you. So that is the session. This session will be led by me, and there is the one person, Mithilesh Jha, and we are covering almost all topic of the business like finance, compliance, taxes, sales, HR. So both we are trying to do. So it is around subject development area opposite of IIT. And venue fees is 499. Timing is the 10:30 to 12:30, and this is on this Saturday, 10th May. So if you have any question, any feedback, please tell me.
Premji, do you have any question, sir? गीता जी, आपका कोई क्वेश्चन, आपका कोई फीडबैक, एनीथिंग? नहीं सर, क्वेश्चन तो नहीं है, बट मैंने जो सेशन अटेंड किया उससे काफी, मतलब मुझे लगता है कि पैसिव इनकम और इस तरह से कि आपने जैसे बताया कि अ, खुद बिजनेस आपको नहीं चला रहा है, आप बिजनेस को चला रहे हो, तो वो चीज जो है, आई थिंक आई हैव नॉट रीच एट दैट लेवल, क्योंकि अभी मेरा काम मेरे बगैर नहीं चलता है। मतलब आई हैव टू बी देयर, अगर मैं कुछ दिन बीमार हूँ या कुछ दिन अवेलेबल नहीं हूँ तो उतने दिन मेरा बिजनेस है ही नहीं। तो आई थिंक वो लेवल अभी अचीव नहीं किया, बट उस लेवल पे पहुंचने की पूरी कोशिश है। डेफिनेटली। और इसमें गीता जी, आई विल टेल वन थिंग कि ये दिस कैन नॉट बी डन इन द 100%, बट वी कैन डू लाइक 30, 40, 50% भी अगर हम अचीव कर लेते हैं। और इफ यू आर द ट्रेनर, आई एम ट्रेनर, तो हमारे और आपके बगैर तो कुछ काम हो ही नहीं सकता। इन केस ऑफ द ट्रेनिंग, इन केस ऑफ द ओन सेलिंग, तो यहाँ पर तो हमें ही रहना पड़ेगा। सपोज दैट माई विथ माई पीपीटी, अगर मैंने ऑफिस के किसी लड़के को बोल दो कि भाई साहब तू आके एक्सप्लेन कर दे, तो इवन इवन मैम, यू और एनी वन विथ माई पीपीटी नो बडी कैन एक्सप्लेन। रीजन इज दैट कि वट एवर द थॉट प्रोसेस आए हैं वो मेरे पास है, वो पीपीटी में नहीं हो सकता है। और इवन आई विल राइट ईच एंड एवरीथिंग, वो फिर बुक हो जाएगा। दे विल नॉट एबल टू एक्सप्रेस। आपका पीपीटी, आपका कॉन्सेप्ट, आप जिस टॉपिक पे बोलते हो वो मैं कभी नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ किसी को भी। सेकेंडली सर, जो रिकॉर्डेड वीडियोस है ना, वो सभी ट्रेनर्स ने वो भी किया रिकॉर्डेड, लेकिन जो वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन है या जो लाइव प्रोग्राम्स है ना, उसको वो अभी भी बीट नहीं कर पाया है रिकॉर्डेड। मैडम, क्या है ना कि जो ट्रेडिशन है ना, अब जैसे आपको जस्ट आई एम गिविंग द वन एग्जांपल टू यू। इफ एनी वन हु इज द एक्सपर्ट इन क्लासिकल डांस, कथक डांस और एनी वन, वो डिस्को डांस या फ्री डांस बहुत आराम से कर लेगा। बट एनी वन इज एक्सपर्ट इन द डिस्को और फ्री डांस, ही और सी कैन नॉट डू द एनी क्लासिकल डांस। तो जो ट्रेडिशन है उसको कभी भी नहीं। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू। अगर आपको आज से 15-20 साल पहले के याद है बचपन का, तो कॉलीफ्लावर, वो गोभी का फूल जो हमें सब्जी खाते, गोभी, ठीक है, दैट वाज ओनली अवेलेबल वाज इन द विंटर। आज के डेट पर वो सालों भर मिलता है। ओके। तो अगर आप गर्मी में कॉलीफ्लावर खाओगे तो दैट विल बी नॉट सो मच गुड फॉर योर हेल्थ, जो आपको विंटर में जो सीजनल वेजिटेबल का चीज है। तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज है मैम। बिल्कुल सर। या Okay, if we have no other question, we can complete today's session. Thank या you, sir, for sparing your time and giving us your valuable tips. या Okay. थैंक यू।